Good. Madam, सुना आज तो पढ़ के आए हो? कितने जन का आज का क्लास वापस? 1 2 3 और कोई? और 1 2 3 ना? ओके, लास्ट क्या कंप्लीट किया था? गैस्ट्रिक ग्लैंड पूरा हो गया। फाइन, 2 मिनट के लिए बुक बंद कर देना। पढ़ के आया हो ना? लेट्स सी। चेक ऑन द लेडीज। तो निकल लिए तो मार्केट okay, Anushka and I take up today. Okay. What are the 5 steps of holozoic growth? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion. बैठने के पहले ना किसी को पिकअप करके बैठ, वॉइस अपोजिट जेंडर। Okay, how do you define evasion? Not the proper word. What is evasion? How the pitch or उसने तो एक सेकंड दे उसने उसको पास द पार्सल, पासिंग द पार्सल गेम होता ना, पिकअप। इसको छोड़ के बाकी सबको पिकअप करना। अरे जल्दी यार, टाइम नहीं अपने में। हाँ क्या मैम, व्हाट इज इट? गुड, सो व्हाट इज एक्सप्रेशन? वही होता है ना, रेडी है और पास करना। अपने पास पूरा दिन removal of undigested food. था, मैंने आपको पहले बोला, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला नहीं आया, क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर मैं बाहर फेंक दूंगा। ये सिंपल था कि नहीं था? तुझे क्लास में बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? हाँ, वहां बैठ गया ना। अरे हो गया ना, मैं आंसर दे दूं ना, अभी क्या करेंगे? ये तो हो गया, क्वेश्चन पेपर ही नहीं आया, अपना आंसर की तरफ कर दिया। Which enzyme is present inside? इससे सिंपल, it's very simple. आंसर नहीं आता, इमीडिएटली सिंपल पास कर। जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। हाँ, इट्स ओके। ओए अरे जल्दी, क्वेश्चन सुन लिया होगा, आंसर आता है तो ठीक है ना, तो इमीडिएटली पास करने का। सलाइवरी अमाइलेज, मैडम बैठ के डू द ऑनर्स। ओके, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सलाइवरी अमाइलेज? तो अपना काम आगे बढ़ते रहने का है। I was not present.
सेकंड को दूंगी ना अपॉइंटमेंट, ये पता है कि अपना एक लेक्चर होता है, आधे लेक्चर में गई थी, so happy to present. Okay, what are the factors affecting photosynthesis? The factors affecting photosynthesis, इतना ही पूछा है. Carbon dioxide CO2 concentration affects the photosynthesis. समझ में आ गई? As CO2 अरे concentration. मैंने एक्सप्लेन करने पूछा ही नहीं. जब मैंने बोला रामायण की कहानी बोलते थे, सिर्फ राम पे अटकी थी. पता है क्या होता है? बस चलिए. अरे वो एक्शन ले रहा है, छोड़ उसका. आज उसका पास है, आज सॉरी आज मेरा पास है, उसको हरा नहीं करो, बात नहीं करेंगे. हाँ आंसर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. क्या तेरा मन भी आएगा, तेरा मेरा मन तो मन में करना. टाइम आपके पास कम है. बस ना इसलिए नहीं कर रहा. मतलब एक को सलाह दी हमारी. अरे मैं भूल गया, अपने पास और भी नमूने हैं. ओ अंशुल, व्हाट इज अनदर नेम फॉर सलाह हमारे? इनका भरोसा नहीं है. ये बुक देख के ही बोल सकते हैं, सो आई डोंट ट्रस्ट देम. सर आई डोंट नील पटाइलिन कुछ था. तू पैथेटिक है, पता है क्या? थाइलिन नहीं होता, थाइलिन है. थाइलिन बोल रहा है. क्या हो क्या मैंने क्वेश्चन पूछ ली. अच्छा उसका आंसर वो आंसर के बाद भी पता नहीं मुझे. गैस्ट्रिक हो गया भाई. सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक. Secretion of gastric gland. मैं काम होगा टेंशन मत. अभी थोड़ा केबीसी को सॉल्व करना ना, इसलिए अभी थोड़ा सा काम करते हैं. तो फिलहाल जिन्होंने आंसर दिया पर बैठे. ठीक है, हिंदी से देखते हो. एक सॉन्ग सुना है क्या? गोल तेरे साथ क्या सलूक किया है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. सुना है कभी? गुड. नहीं सुना है? अरे इतना बोल तो बोल दिया मैंने. बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. अब किसके लिए आप लोग बताइए? गुड. तो सोच के बताना इनके साथ क्या करना. वैसे मैंने सबको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा था, सो आई डू नॉट फॉलो दैट कि आपने बिल्कुल पढ़ा है और तूने तो बिल्कुल बुक को तो हाथ भी लगाया नहीं, दूर दूर तक भी लगाया.
इनका तो समझना आता, थोड़ा बहुत ट्राई भी नहीं किया, इनमें तो बिल्कुल ट्राई नहीं किया। ट्राई भी तो उसका पार्ट समझना आता, थोड़ा बहुत तो लिखा नहीं था, पर सबसे सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए था और तुम्हारे लिए था, और तुम उससे प्रेजेंट ही माइंड दो बार रिपीट किया। व्हाट आर फैक्टर्स, कभी भी आप रामायण की तरह पूरा एक्सप्लेन करते सकते हो। वन स्टैंडर्ड, वन स्टैंडर्ड। बाकी को बोर्ड दिख रहा है सबको? इनके वजह से अगर डिस्टर्ब हो रहा होगा खींच के बाजू में कर देंगे, ठीक है? पूरा अरे ये उधर नहीं रे बाबा, इधर। I do not want you to mind the others view ना, इसके लिए आज 1 घंटा खड़े रहना, उसके बाद 1 घंटा रुकना, तब बताऊंगा नेक्स्ट 1 आवर में क्या करना, ताकि नेक्स्ट टाइम होमवर्क ढंग से करके आओ, ईमानदारी में करके आओ, इतना लाइट नहीं लोगे। आज अगर छोड़ दिया तो तुम मेरे सर पे आके नाचोगे। सो बेटर यू वुड कॉल योर पेरेंट्स एंड आई विल कॉल द पेरेंट्स, यही बता देना मुझको। 1 घंटा रुकना है ना, इसके बाद बिगड़ जाओगे ना इसके बाद। हाँ तो घर वाले चिंता करेंगे, बेटा बेटी अब तक आएंगे, तो तुम फोन करोगे या मैं यहाँ से मैसेज डालूं, ये पूछना है जल्दी। अरे हाँ या ना तो आंसर दे सकते हो ना। आज का कल का थोड़ी है, आज का बोल रहा हूं, ठीक है? मैं मैसेज डाल देता हूँ, फिर मैसेज में क्या क्या डालूंगा उसका उम्मीद मतलब। अगर यू कॉल तो तुम टेपा मारते हो, मम्मी एक्स्ट्रा लेक्चर था इसके रेडी सर ने रुका के रखा, ठीक है? अब वो तुम्हारा चॉइस है। We go ahead with the next part. Okay? Last अपन ने कंप्लीट किया था गैस्ट्रिक ग्लैंड, so just quickly revise on gastric gland. Gastric gland secretes gastric juices. Gastric juices made up of HCl, mucus, and pepsin. What does HCl function? Acidic medium, disinfectant. What is pepsin functioning? It breaks down proteins into peptides and peptones. Peptones. And lastly, mucus. From HCl से थोड़ा बेटर वर्ड क्या होगा? From the corrosive action of HCl. HCl हाथ पे डालने के बाद जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वही पेट पे दिखाई दे रहा है, तो from the corrosive action of the HCl. ये सब प्रोसेस, चिल्ड्रन I want you to close your volume. बुक है मुझे पता है आपके पास. Yes, please close your volume and focus onto the board part. Now the movement is this process which is occurring. Where is this process occurring? Stomach. Now at the start of the stomach, स्टमक के स्टार्ट में और स्टमक के एंड में there are specialized muscles. These muscles are referred as sphincters. एक तरह का वाल्व का काम करते हैं. So on the upper part there is a sphincter, on the lower part there is a sphincter. आपको नाम नहीं है, that is known as cardiac and this is known as pyloric sphincters. Not required for you. For you it is just simple. At a starting point where the stomach start is a sphincter. At a part from where the intestine start is the sphincter. These are nothing but specialized muscles whose function is to regulate the food in and out of the stomach. तो यहाँ पे एक तो पेरिस्टालसिस के वजह से फूड स्लो हो रहा है, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा. अब ये गेट कीपर का काम करता है, भाई अंदर आना है या नहीं करना है. ये स्फिंक्टर ओपन होगा तब अंदर आएगा, एंटर्स होगा या फूड ब्रेकडाउन होगा, सब कुछ ब्रेकडाउन होने के बाद एक ही बार स्फिंक्टर ओपन होगा एंड इट वुड अलाउ द फूड टू मूव फर्दर. सो स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंडिंग ऑफ द स्टमक. फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द फूड इन एंड आउट ऑफ द स्टमक. कोई डाउट है? आगे बढ़ू? चल सिख मुंडी हाँ ऐसे मत करना,
तो अगले टाइम बहुत कुछ होगा, आज भी होगा, कल भी होगा नेक्स्ट टाइम. Next, we move ahead. Now, from that, the digested part, okay, is moving further into the next part. What is the next part? Small intestine. Small intestine is the longest part of the alimentary canal. Anybody? How much? So 9 almost अपना body होता है. 7 meters is your only small intestine. अब इस small intestine में further divided 3 parts. आपको तीनों part के नाम नहीं, but आपको first part का नाम है. What is the first part? अगर ये small intestine है मान लो, divided into 3 regions. What are 3 regions? Anybody? Ileum, duodenum, and jejunum. Good. The first part is duodenum. Ileum, jejunum. Okay. अब अपने लिए मायने नहीं है, अपने लिए काम है. So अपने लिए सिर्फ काम का कौन सा है? Duodenum. The first part from where the small intestine start, that part is known as duodenum. Now, what is the significance of this duodenum? Duodenum यहाँ से चालू जाता है ऐसे. It is in the duodenum the 2 major glands open together. So जैसे food आएगा, so this is the small intestine part. So इस duodenum part में simultaneously there is a opening of the 2 glands. What are 2 glands? Liver and pancreas. लीवर लेफ्ट पे और ये राइट पे, मतलब एक्चुअली ये राइट पे और ये लेफ्ट पे, पर बोलते हैं अपन ऐसे बोलते हैं. लीवर थोड़ा ऊपर होता है, पैंक्रियास थोड़ा नीचे की तरफ होता है. ओके ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. वी आर जस्ट सेइंग that they open 2 glands together. Now children, what do you mean by the 2 glands together? दोनों ग्लैंड है. ये अपना कौन सा नंबर है ग्लैंड का? 3rd and 4th. So the first gland which is second gland, third, थर्ड सीक्वेंस में हमेशा लीवर पढ़ोगे पहले और फिर पैनक्रियास पढ़ोगे. इसका फंक्शन इसको हेल्प करता है. सो वी डोंट से पैनक्रियास फर्स्ट एंड देन लीवर, वी ऑलवेज से लीवर एंड देन पैनक्रियास. नाउ लीवर ओपन्स ऐसे, पैनक्रियास ओपन्स फ्रॉम द डक्ट्स. दे आर डक्ट ग्लैंड्स. ये अलग अलग हो गए, मतलब यहां से एक पाइप जा रहा है इधर, यहां से एक पाइप जा रहा है इधर. दोनों साथ में जा रहे हैं क्या? नहीं. बट इन रियलिटी दे डोंट गो लाइक दिस, दे एक्चुअली गो लाइक दिस. लीवर से एक पाइप आता है, इसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट. पैनक्रियास से एक पाइप आता है, इनको कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट. दे बोथ जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन पाइप. यहां से वो कॉमन पाइप हो जाएगा, which is known as hepatopancreatic duct. Again, इसमें आपको डक्ट्स के नाम वगैरह कुछ नहीं याद हुआ तो अच्छी बात है. हेपेटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, hepatopancreatic duct. So this is the duct which opens together to open into the duodenum part of the small intestine. Am I clear? Everybody? बैठो, आज के दिन छोड़ रहा हूं. बैठने के लिए सिर्फ पनिशमेंट के लिए रिलीफ नहीं करते. अब भी सिर्फ बैठने के लिए. सिट सिट. बाकी पीछे बैठे तो पीछे के बैठ. So hepatopancreatic duct, hepatic duct and pancreatic duct. Now, what are their secretions? So we need to study now the third gland, that is liver. So what does liver secrete? Bile juice. So liver secretes bile juice. What is bile juice made up of?
बोलो right wrong I'm there to get, don't worry. And वो नेचर हुआ पाउडर नहीं बोलते अपन उसको. So it is made up of bile pigment, rightly said, plus bile salt. Okay, so it is the only gland. ये आपका अभी सिलेबस में नहीं, ये बहुत पहले सिलेबस में था, somewhere in 2002 और 2004 के आसपास. अभी वो सिलेबस से निकल चुका है पूरी तरह से. आपके वॉल्यूम में शायद एक क्वेश्चन है जो बहुत पुराने बुक का उठाया गया था, अभी भी शायद डिलीट नहीं. इट हैज सोडियम बाइकार्बोनेट्स, तो उसके वजह से वो अल्कलाइन नेचर आ जाता है. एंड इट इज द ओनली जूस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द ग्लैंड बट डजंट हैव एनी एंजाइम. ब्रेक डाउन करने में क्या हेल्प कर रहा है, पर वो एंजाइम नहीं. ओके, सो दैट्स बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट. नाउ व्हाट इज दिस बाइल पिगमेंट? पिगमेंट का नॉर्मली क्या काम होता है? कलर. तो ये किसको कलर दे रहा है? क्या? येलो. इट इज दिस बाइल पिगमेंट which gives color to the bile juice. It is this pigment which gives color to it is this which gives color to okay, ये सब इनके डेरिवेटिव्स है. तो the urine is yellow, कहीं ना कहीं यहां से आता है, बोलने की जरूरत नहीं है. okay, so वो भी इसी से डिराइव होता है. so कहीं ना कहीं bile pigment का रिलेशन is giving the coloration to the bile juice as well as the urine as well as the fecal matter comes from this. हमारे लिए काम का नहीं, not required. We are more focused on to this part, bile salts. पर बुक में bile salt करके लिखा नहीं, ओवरऑल बोला है bile juice. okay, overall function is bile juice के बारे में बोला है. So what is the bile juice function or bile salt function? It brings about two important functions. The first function is it neutralizes the food. मतलब क्या? क्यों? ताकि उसका अल्कलाइन मीडियम बना पाए, ताकि गुड. ट्रिप्सिन रिएक्ट करे उसके अल्कलाइन मीडियम से. और कोई रीजन सकता है? Then stomach is protected by mucus. Is small intestine protected by mucus? No. उसमें बहुत thin line होता है. So that will not help the small intestine. तो इस चक्कर में तो small intestine बंद हो जाएगा. So in order to avoid that, to protect it, the food which is coming from the stomach is immediately neutralized by the bile juice, and it raises that contain into अल्कलाइन मीडियम. जहां पे भी मीडियम वर्ड आ रहा है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो अल्कलाइन हो, उसका एक ही फंक्शन, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स. हमने देखा था एसिडिक मीडियम इट एक्टिवेट्स पेप्सिन, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट कर रहा था. सेम वे अल्कलाइन मीडियम इट एक्टिवेट्स नॉट ओनली द एंजाइम्स which are present in the pancreas but all the enzymes which are present in the intestine or also been activated by alkaline medium. So alkaline medium के बिना कोई भी enzyme work नहीं कर पाए. Sure, clear this part, everybody? So here it neutralizes and raises it to alkaline medium for the activation of pancreatic as well as intestinal enzymes. तो ट्रिप्सिनोजन लिखा तो भी चलेगा, पर वो एक हुआ, वो पूरे कंपोनेंट्स को एक्टिवेट कर रहा है, ना कि सिर्फ एक. सो ऑल द एंजाइम्स which are there in pancreas, all the enzymes which are there in intestine, उन सबको अल्कलाइन मीडियम पे ही वर्क करना है, and that is provided by the bile juice. The second and the most important function is emulsification of fats. So what is emulsification of fats?
breakdown of fats. Now आपके बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है, प्रॉपर रिएक्शन फॉर्मेट. Lipids are broken down into small fat globules. To put in a proper word, ये proper technical term हुआ. Simple language में समझाना है तो what are lipids? They are fats, but they are huge complex molecules. So यहाँ पे bracket में large molecules are broken down into small molecules, droplets. This process is known as emulsification of fats, which is carried by bile. देखा जाए तो bile juice में actually it is bile or soil. Clear? Now, my question to everybody is, सबको समझ में आ गया? क्या large molecules are broken down into small pieces? This is known as, why the name emulsification? यहाँ पे emulsification का मतलब क्या, कोई समझेगा? अपन ने ये वर्ड इसके अलावा कहाँ पे सुना? क्या क्या होता है emulsion? Liquid है ना? Sure. सर वो होता है ना कोलॉइड, लिक्विड इन अ लिक्विड. कोलॉइड, लिक्विड इन अ लिक्विड पर कोलॉइड फॉर्म. ओके, जेल्स वगैरह यूज करते हो, इमल्सिफायर होता है, कि इमल्शन बोलते हो उसको. यहाँ पे चिल्ड्रन, इफ आई टेक अ सिंपल एग्जांपल, आपके हाथों में पानी रखा है, वाटर, एंड आई पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑनटू इट, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, सबको पता है. ओके, अब आई टेक माय फिंगर एंड रब इट विगरसली लाइक दिस. पानी को गिराना नहीं है, सिर्फ ऐसे मूव करना है. अब क्या होगा? ऑयल के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, देन थोड़ा स्टिकी हो जाएगा अगर टच करोगे तो. अभी वो इमल्शन बन रहा है. जो फूड स्टमक से आया या जो डाइजेशन पार्ट स्टमक से आया, व्हाट इज इट? इट इज ऑलमोस्ट 90% वाटर. उसके ऊपर क्या फ्लोट हो रहा है? फैट्स. एक तरह का वही हुआ ना, वाटर के ऊपर फैट्स, एंड देन द बाइल सॉल्ट वर्क्स ऑन टू इट, bringing a colloidal form of it, breaking down into small fat globules. Now why, sir, why small fat globules? Directly break down क्यों नहीं कर पा रहे? Reason, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड ज्यादा दूर जाने की जरूरत है. We can prove it in a very simple way. हाँ, बहुत मेहनत करने के बाद भी कम नहीं होता, वो फैट्स होता है. कि चर्बी इतने आसानी से घटती नहीं, आया ना? Okay, so children, exactly same thing. These fats are the largest molecules, cannot be broken down directly easily. So there is an option. एक स्टैचू बनाना है हमें छोटे छोटे, और अपने वो एक बड़ा पत्थर है. डायरेक्टली क्या करोगे? क्या पहले वो छोटे बड़े बॉक्स रॉक को छोटे बॉक्स में कट करोगे? रॉक्स में फर्स्ट कट इट इनटू स्मॉल रॉक्स, ताकि वो इजीली काव करो. एक ही रॉक पेपर नहीं कर पाओगे. तो वही हो रहा है, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन टू स्लाइटली स्मॉलर वन. स्मॉलर द स्ट्रक्चर, greater is the surface area. The greater the surface area, more would be the enzyme activity. तो ये आगे आसानी से ब्रेक हो जाएगा. Is it clear? Anybody doubt anything? The food which is coming from the stomach, stomach से होते हुए food यहाँ पे आया. In the small intestine, that is duodenum part. So normally from the stomach, what type of food will come? Acid. Acid stomach से बच रहा है because stomach has a mucus line. Intestine में there is no mucus line, it is very thin. So then it will burn the stomach. So in order to protect that part, first we need to neutralize the food. So that is done by bile salts. इसलिए bile juice यहाँ पे. So bile salt neutralizes it. पहले उसको neutralize करेगा, फिर it will raise it to alkaline medium. Why alkaline?
एक्वायर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, सो अल्कलाइन मीडियम होगा. This alkaline medium helps in activation of pancreatic and all the further enzymes present over there, which is required for the enzyme activity. And then comes the next process, emulsification of fats. Here, shall I go ahead? Okay. अब food कहाँ पे है? I did not understand the activation of pancreatic. What was that? Activation मतलब without alkaline medium, the pancreas enzyme will not work. That is known as activation. So without this Simple language में बिना चाबी के घर का दरवाजा नहीं खुलता, बिना चाबी के बाइक चालू नहीं होती, गाड़ी चालू नहीं होती, बिना सिम कार्ड के मोबाइल चालू नहीं होगा, मतलब चालू होगा. सो बिना अल्कलाइन मीडियम के पैंक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं कर पाए. Here, next. Now comes the next one. What is the next one? Pancreas. Shall I go ahead? Okay. So next gland we are going to study is pancreas. So what does pancreas secrete? Pancreatic juices. What is pancreatic juices made up of? They are made up of 3 enzymes. चल बहुत सारे हैं. प्लीज रिमेंबर, हम सिर्फ सीबीएसई के लेवल का पढ़ रहे हैं और हम सिर्फ अपने काम का पढ़ रहे हैं. तो अगर आप आईसीएसई में जाओगे तो बैटरीज ऑफ एंजाइम, 11 12 में जाओगे तो और बैटरीज ऑफ एंजाइम. इतना डिटेल करना हो तो डॉक्टर ही बन जाओगे. ओके, सो वी आर ओनली रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू बेसिक नॉलेज. थोड़ा 3 एंजाइम्स. सबसे पहले आप जो बोल रहे हो क्या? पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लिपेज. तीसरा एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज. 3 एंजाइम्स हैं, तीनों के रिएक्शंस पढ़ने हैं. सबसे पहले पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन. देन अगेन सेम जैसे पेप्सिन था, इट वाज पेप्सिन सिक्रेटेड नहीं, क्या सिक्रेट हो रहा था? पेप्सिनोजेन, which was converted into pepsin by HCl. क्या कर रहा था वहां पे? प्रोवाइड कर रहा था ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिनोजेन converted into trypsin by alkaline medium. यहां से आया हुआ. So trypsin actually secret होता है. This trypsinogen converted into trypsin by alkaline medium. So what is the function of trypsin? स्टमक से क्या आया? और चाय पर क्या आया? प्रोटीन का कौन सा पार्ट आया? पेप्टोन्स converted into peptides in the presence of pancreatic trypsin, in the presence of alkaline. लिखना इंपॉर्टेंट. ऐसे वहां पे था, ऐसे यहाँ पे भी. So in the alkaline medium, presence of pancreatic trypsin, peptones are broken down into further simpler form, peptides. Pancreatic lipase. Lipase, lip मतलब lipids break down. So what does it break? Lipids into proteins. इसके आगे जा रहे हैं ना अपन. इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को कहा जाता है emulsified fats. So अब ये आगे बढ़ रहा है. So what is broken down? Emulsified fats into fatty acid plus excellent. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अटेंडेंस शीट. ग्लिसरॉल. अपन ओवर कॉन्फिडेंस में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज वो अलग है, ये अलग है.
So it is fatty acid cortisol, the last components of lipids. इसके आगे break down नहीं हो. So lipids are ultimately broken down into fatty acids and glycerol. Is it clear, everybody? So we go ahead to the next part. Pancreatic amines. ना इन सब में ये आएगा alkaline medium, alkaline medium. ये क्या ब्रेक डाउन करता है? अरे amylase, sugars, proper word, carbohydrates into simple sugar, oral starch into glucose या maltose. Okay? Now my question to everyone. समझ में आया? yes, Everybody. मैं रिपीट करता हूँ. स्टमक से फूड आया कहाँ पे? इन द डिओडिनम. डिओडिनम में पैंक्रियाटिक जूस वर्क कर रहा है. पैंक्रियाटिक जूस में फर्स्ट इट ब्रेक डाउन पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स. पेप्टोन कहाँ से आया? इमल्सिफाइड कहाँ से आया? सर्वास. अब पैंक्रियाटिक amylase, is this enzyme repeated? salivary amylase. तो salivary amylase ने ऊपर सब ब्रेक डाउन कर दिया, तो नीचे क्यों चाहिए होगी? हाँ, मुझे समझ में आ गया. तो मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जो salivary amylase इधर वर्क कर रहा है ना कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो यहाँ पे क्यों चाहिए मुझे? फिर वो ब्रेक डाउन करके आ गया ना. डुप्लीकेट करना है. वो सलाइवा हमारे डुप्लीकेट नहीं करता है, वो सलाइवा करता है. एंजाइम फंक्शन नहीं करता डुप्लीकेट. क्यों थोड़ा सा? तो राइट पूछ रहे हो. क्यों नहीं? क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं जगह कर में नहीं. हाँ, क्यों नहीं यार? ऑलमोस्ट नियर ना. ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गए. प्रोटीन्स और फैट्स ब्रेक डाउन. अब प्रोटीन फैट्स है ही नहीं, नया कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फटक से आंसर आ जाएगा. क्लास में कितने जन डब्बा खाते? अब बस बिना क्लास चालू होते भी बोल, मतलब टीचर पढ़ा रही है और अपन डब्बा खा रहे पीछे चुप के. ऐसे बहुत जन हमने इसमें खाया होगा. इतने शरीफ तो तुम हो, तो ये विंडो ओपन करो, जम करो. तुम्हारा तुम लायक ही नहीं हो फिर. यार लाइफ में कुछ तो किया होगा. इतने शरीफ दिखता है तो नहीं रे. शक्ल से तो लगता है पूरा बदमाश है. क्या जिंदगी है तुम्हारी. तो तुमसे बेटर तो मैं था. फिर पहले रिक्शे में खा लेता था बाप क्यों के. अपना डब्बा लाख में खाना होता है. मान लो इसने डब्बा खाया था, अच्छी बात. हाँ, इमेजिन मैं पढ़ा रहा हूँ और दिखाते खाओगे सीधा. And suddenly I turn around and I catch hold. खाते वक्त it was by proof कि मैं आपको सीधी से उठाया. आपके मुंह में अभी नहीं वाला है. Okay, and like I asked, okay, what's the name? आपको ये आंसर करना है, तब क्या करोगे? Correct. Have you given time for saliva to function? बगल कैविटी वही है ना. कितने बार होता है कि मम्मी ने मस्त ब्रेकफास्ट बनाया कि अपन खा रहे होते हैं और इतने में दोस्त के तो मम्मी जल्दी जल्दी लेट हो रहा है. तो अपन मम्मी उधर बैठ के खा तभी जाएगा तू. अच्छा मम्मी खा लिया जाओगे. So are you giving time for saliva? No.
So it is not कि वो लार्ज चंक्स होगा, सब कुछ है, वो क्यों है? बिकॉज अपन बोलते हैं, सिर्फ बोलने के लिए क्या जाता है? When we eat the food, we should chew our food 32 times. Okay? Do we do that? Yes, we do that. Conditions applied. Okay? बाकी डन। पर 10th में स्पेसिफिकली ये होता है, 10th में मम्मी डैडी बोलते हैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा मिलेगा टीवी देखने। वो भी आधा घंटा मतलब कब? जब तू खाना खा रहा होगा तब तू टीवी देख सकता है, वरना गो टू योर रूम एंड स्टडी। सो अपन डैड मम्मी के एकदम ओबीडियंट बच्चे, टीवी देखते वक्त मैं खाना खाते वक्त टीवी देख सकता हूँ। तो तब मम्मी टीचर ने बोला था 32 टाइम्स, 32 टाइम्स। वी आर वेरी ओबीडियंट मॉम। बायो टीचर ने बोला था 32 टाइम्स चुका। Okay, son, when you chew the food properly, then there is no problem. But always some amount will always miss out. So that miss out will be taken care by pancreatic amount. There is always a filter. इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो किधर, पर पकड़ा तो जाएगा। कोई डाउट है? ओके, फूड कहाँ पे है अभी भी? अब द स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा है, तो अभी भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लास्ट पार्ट, the small intestine also acts as a last gland. Okay? Intestine का inner lining, जैसे stomach का inner lining forms a gastric gland, intestine का inner lining forms the last gland known as intestinal gland, which secretes intestinal juices, which is made up of blah 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 blah, बहुत सारे एंजाइम्स। लकी हो कि आपको सिलेबस में, सो आपको क्या पढ़ना है? Whatever we are writing for intestinal juices is the summary of all the reactions which you are studying. So what is the summary? We say the intestinal juices helps in complete breakdown of food. So what is complete breakdown of food? I'm not writing complete now. Carbohydrates into simple sugar, proteins into amino acids, lipids into fatty acids plus okay. Technically देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट into simple sugar वही एक सिंपल सेम रहेगा, बट अगर मैं प्रोटीन into अमीनो एसिड बोलूं तो एक्चुअली ये प्रोटीन्स कौन सा है? पेप्टाइड्स, जो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन ने ब्रेक डाउन किया, उसके आगे कंटिन्यू हुआ टू ब्रेक डाउन इनटू इट्स लास्ट कंपोनेंट अमीनो एसिड्स। लिपिड्स कौन से होंगे यहाँ पे? स्टिल इमल्सिफाइड, जो बचे कुछ है, सब कुछ वहां पे डाइस हुआ नहीं होगा, जो भी बच गया है ना आगे अपने पास। सो इट वुड फर्दर ब्रेक डाउन इनटू इट्स लास्ट कंपोनेंट फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। So this is the overall summary of digestion. कोई doubt है? Sure. Everybody, online children. घूमगे हो या बहरे हो? नहीं दे रहा है। So now we go ahead with the last part. Which process have we completed by studying this part? अब से अपन डाइजेशन भी ऐसे करते हैं। ये उसके बाद क्या है? क्या? Absorption. Okay? तो चिल्ड्रन अब डाइजेस्टेड फूड का है, अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है। Okay? So now children, as the food moves into small intestine, the small intestine ये मेरा ताला करवा की रहेगा। Okay, now the small intestine will go on.
The inner part of small intestine, when I take a cross section, yes, small intestine. But it's not smooth नहीं. It has finger-like projections. This finger-like projections are known as villi. Okay. Now, if I take a single villi, made up of epithelial tissues, 9th standard tissue chapter, शायद भूले भटके से पढ़ा होगा तो. So in that epithelial tissues are surrounding to it are present your blood capillaries. What are blood capillaries? Again, single ciliary epithelial tissues. तो ये भी epithelial है, ये भी epithelial है. They are simple epithelial tissues, membranous है, so easy diffusion can take place. So food, the digested food diffuses into the nearby blood capillaries. This process is known as absorption. So next question is, what is the importance of villi? To increase the surface area for absorption. Okay, the villi increases surface area many fold times, almost 100 times. Because इनसे surface area तो बढ़ता ही है, पर इसके ऊपर blood capillaries है, उसके वजह से ये और ज़्यादा बढ़ता है. It's like ये villi इसके ऊपर thread घुमा गया, तो उसका और surface area बढ़ेगा. And that is why the villi helps in increase surface area, whose function is to absorb the digested food. Absorption हो गया. Food कहाँ पे absorb हुआ? Intestine part से absorb हुआ. कहाँ पे हुआ? Blood capillaries. So from the blood, where it will go? All the parts of the body. For what purpose? For transport हो गया खाई के लिए पर. For use, growth, repair, replacement, reproduction, wear and tear सबके लिए. Okay, energy production, all these things. A process known as assimilation. So absorption हो गया, assimilation. अब what is left out in the small intestine? Small intestine में किसमें बचा है? Undigested food. So undigested food is present in the small intestine. Where it will move now? Large intestine. Small intestine. At the junction of small intestine, there is a pouch-like structure. और वहां से आपका चालू जाता है large intestine. Okay, not there for syllabus. ये बुक में ऐसे मेंशन किया appendix. सुना है? क्या होता है appendix? Just like organ which is not going into the body. Just a moment, small in the body. Okay. Okay. Heard about a word appendicitis? क्या होता है? सुना लग रहा है. Then appendicitis is nothing but ये ना appendix simple language में बोला जाता है कचरे का डब्बा बोलने के लिए बोलूँगा. Okay, अपन ये municipality कचरे का डब्बा देखा है? What is the peculiarity of a municipality कचरे का डब्बा? क्या? खाली रहने का चांसेस तो बहुत कम होते हैं अपने यहाँ पे, तो वो भरा रहके ओवरफ्लो होने का चांसेस ज्यादा रहता है. ऐसे बाहर कचरा गिरा इधर उधर. ये भी अपने कचरे का डब्बा, मुंसिपलिटी का डब्बा, जहाँ पे अपन कचरा डालते. एक दिन स्वेल हो जाता है और ऐसा स्वेल होते एक दिन एक दिन वो बर्स्ट हो जाता है. द मोमेंट इट बर्स्ट, उसके अंदर बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस होती है दैट इमीडिएटली स्प्रेड्स इन योर बॉडी. आधा घंटा मैक्स. उस आधे घंटे में आप हॉस्पिटल तक पहुंच गए तो अपना हिंदी मूवी का सिनारियो विनम बोलता है तेरे पास आधा घंटा है, हॉस्पिटल तक पहुंच गया तो तू बच गया वरना तू गया.
तो वो बचा, मतलब पहुंच गया, डॉक्टर ने बचा लिया तो बच गया, वरना कंफर्म टिकट, नो रिटर्न। नाउ चिल्ड्रन, दिस अपेंडिक्स, जैसे इसने कहा, इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, नॉट ऑफ एनी यूज। जैसे उसने कहा हमारे एंसेस्टर्स में व्हेन वी ईट रॉ फूड, तब वो काम आता था फॉर डाइजेशन। अब दोनों अपनी जगह राइट है। तो तीसरा क्वेश्चन, ये नॉट सिलेबस पर सिर्फ, अगर स्वेल हुआ तो क्या होगा? बस बस हुआ तो ऐसी कुछ चीज जिसके बस होने से मैं मर जाऊंगा, तो उसको पहले निकाल दो ना, बिकॉज ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। इट्स जस्ट देयर नो, तो व्हाई टू टेक अ रिस्क, इट्स जस्ट देयर। उससे अच्छा निकाल ही देता हूं, ना रहेगा बास ना बचेगी बास, वैसा है ना रहेगा अपेंडिक्स तो ना होगा स्वेलिंग, ना होगा स्वेलिंग तो बच होने का चांसेस ही नहीं है, और चांसेस ही नहीं है तो अपन मरेंगे कैसे? वो ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, उसको निकाल सकते हो, तो उसका एडिशनल गुड आउटपुट होता है। देन द रीजन इज स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्टिकल्स एब्सॉर्ब उसके आगे की प्रोसेस के लिए नॉर्मली अपेंडिक्स ऐसा देखा जाए तो कोई फंक्शन नहीं है, इट्स अ डिबेटेबल ऑर्गन, बिकॉज कई बोलते हैं कि इसमें कोई इम्यूनिटी से फंक्शन है, कई बोलते हैं कि ये नॉन फंक्शनल है। जो भी है आपने उससे कुछ करना है कि अगर वो स्वेल हुआ तो प्रॉब्लम है, वरना इज इट नॉट प्रॉब्लम? नो। यू आस्क योर पेरेंट, आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ? नो, दे मे नॉट हैव। और कितने जन ऐसे होंगे जिनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं होता पर वो जिंदा रहते हैं और बाद में नेचुरल डेथ होते हैं। तो द रियलिटी ऑफ लाइफ इज, जो आया है वो जाएगा एक बार। अब चिल्ड्रन, एट द एंड वो लाइफ तो हमेशा रिस्की होता है, आप रास्ते पे जाओगे तो भी मरोगे, इसका कोई गारंटी है नहीं। बट इफ यू ट्राई, सर आगे जाके बस होगा, उससे अच्छा मैं अभी निकाल देता हूँ, ठीक है, यू कैन रिमूव, बट नो वेयर इट इज रिटर्न। क्या टाइम पास करने के लिए सर्जरी करना होता है? सो एक टाइम पास का आपको रिस्क लगता है तो इसको निकाल दिया। ये दूसरी, आप हट्टे कट्टे थे तो आपने सर्जरी कर लिया, हाँ या ना? और सोचो 10 साल के बाद जब आप ये सर्जरी करने सोचोगे, या आपके नेक्स्ट जनरेशन वाला ये सर्जरी करेगा, एंड सर्जरी आप ही करोगे कि विद द कोविड डिग्री, तो बेचारा 50 साल आगे जिंदा रहने वाला था बाय डिफॉल्ट, वो तुमसे ऑपरेशन करने के बाद कोविड डिग्री लेके डॉक्टर बने हो, भूले भटके से इधर का उधर हो गया, जो 50 साल जीने वाला था उसको आपने टेबल पे ही मार दिया। क्यों? अपेंडिक्स निकालना था, वो तो प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट कर रहा था, टीचर ने बोला था प्रॉब्लम होगा तो निकाल दिया। वी कैन नॉट जस्ट रिमूव बिकॉज अपना टाइम पास कर। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि वो स्वेल होता है एंड एज सिम्टम्स। अगर वो सिम्टम्स समझ में आते हैं तो इट मे बी अ चांसेस ऑफ अपेंडिक्स। ऐसा नहीं है क्या ऐसा बिल्कुल कुछ ना होगा और इमीडिएटली बच होगा, ऐसा भी नहीं है। इट विल गिव अ वार्निंग टू यू कि बाबा हाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कि वार्निंग समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। अरे देश का भला होगा ना यार, एक कम होगा मतलब इन शॉर्ट 5-6 जगह और कम हो जाएंगे, आया ना? कि अब तू गया, तेरे आगे पीछे हम दो, हमारे 10-15 इंडियंस एट द एंड ऑफ द डे वी फॉलो ना द रूल, यूनिवर्सल रूल, हम दो हमारी क्रिकेट टीम एक ही ना, वो करना है। मतलब चल ये बात पहला लड़का जो बोला करना है, तो नॉर्मली बोलना सर शादी अभी नहीं करना है, मतलब एक्सेप्ट तो कर रहा है, करना है, गुड, दैट्स द अपेंडिक्स पार्ट। अब इसके आगे मूव कर रहा है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एग्जैक्टली अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वैसे लार्ज इंटेस्टाइन, सिर्फ माइनर डिफरेंस है, उनमें भी विलाय है इनमें भी विलाय है, पर लार्ज इंटेस्टाइन में विलाय आर लार्जर इन साइज लेस इन नंबर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? स्मॉलर इन साइज मोर इन नंबर। माय क्वेश्चन इज
अब लार्ज इंटेस्टाइन में विलय क्यों है? और the large intestine सिर्फ एक चीज absorb करता है. Our body requires water at all costs, so it will try to absorb maximum water, and that is where सॉल्ट हो जाता है, because उसमें से पानी खींचने के बाद it hardens up. अब वो डिपेंड करता है कि अब कितना पानी एब्जॉर्ब हो. अगर कुछ नहीं हुआ तो अपन टेक्निकली बोलते हैं लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया, एक ही चीज है. और अगर पानी कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. फुल स्टॉप लगा. Am I clear? So large intestine does that function. उसके बाद अब जब एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, then we say it as fecal matter. Till that we always say it as undigested waste. Okay, so absorb होने के बाद fecal matter, which moves to the last part, rectum, temporary storage, कुछ लिखना नहीं है उसमें, and then it is expelled out through an opening known as anus. Anus sphincter at the base of the anus. तो अगर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है जो ऐसे आ रहा है और दिस इज द ओपनिंग, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं नोन एज एनल स्फिंक्टर्स. सो स्फिंक्टर्स अगेन स्पेशलाइज्ड मसल, जैसे स्टमक में थे वैसे यहाँ पे, वहां पे वो रेगुलेट इन एंड आउट कर रहे हैं. यहाँ पे लिख के मत आना रेगुलेट इन एंड आउट, के आउट हो सकता है, इन नहीं हो सकता. सो हियर व्हाट इज द एनल स्फिंक्टर? It expels the fecal matter out. It is this anal sphincters which provides the necessary force to expel out. बचपन में मम्मी डैडी बोलते थे, या बुढ़े लोगों में आपने सुना होगा, प्रेशर नहीं आया. okay? मम्मी बोलते बेटे जम कर जम कर जम कर. okay? तो प्रेशर आएगा तो भागेगा. okay? So this is what it means. ये स्फिंक्टर्स आपको फोर्स प्रोवाइड करता है फॉर इट टू एक्सपेल आउट. Am I clear? So the moment it is expelled out, we are completed with the last step. What is that? And that completes our holozoic nutrition in human beings. कोई डाउट है? Sure? Everybody? अगले लेक्चर में पता चलेगा कितना समझ में आया कितना नहीं आया. अगले लेक्चर में मैं फिर इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब एक साथ टेक केयर कर लूंगा, है ना? Dark reaction. In the dark reaction, very specifically a part of photosynthesis, where in the light reaction activation of chlorophyll takes place, which forms electrons. Then comes photolysis of water, where water is split into hydrogen and oxygen. So this hydrogen and the electron in the chlorophyll part will go on to form energy molecules, ATP and NADPH. ATP लिख दिया और energy molecule लिख दिया, काफी है. This energy molecules would reduce carbon dioxide, ATP plus NADPH plus CO2 to give me glucose. This process is known as dark reaction, या Kelvin cycle, या light independent phase. NADPH वो लिखते वक्त NADPH या NADP2 वो लिखते हैं, उसका वो आयन फॉर्म. हाँ, उतना आपको जरूरत नहीं थी. इसमें और NADPH मैंने सिर्फ आपके लेवल पे रिप्रेजेंट किया. इट इज NADPH2 प्लस और उसके बाद नीचे इलेक्ट्रॉन करके फिर आगे जाता है. अपने को केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, बायो पढ़ना है. सो बेसिक नॉलेज में NADPH, वो भी आपको वर्ड नहीं है, मैंने आपको कुछ बताया. यू कैन राइट एनर्जी मॉलिक्यूल, स्टिल इट इज या
होपफुली स्टडी प्रॉपरली डू। जाता रहे हो, तुम्हें रुकना है, भूल गया ये जिनको पनिशमेंट है, जिनको पनिशमेंट है वो रुको, बाकी सब एग्जिट। कल करेंगे बाद में। अरे बाकी